Hello everyone. In previous class, we discussed about what is voltage regulation of the alternator and different methods by using we can find out the voltage regulation of the alternator, like direct loading and indirect loading method. उसमें हमने स्टडी किया था इनडायरेक्ट में देयर इज फोर मेथड. फर्स्ट वन इज कॉल्ड सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड, सेकंड इज कॉल्ड द एम्पियर टर्न और एमएमएफ मेथड, थर्ड इज ZPF or Potier triangle method. ZPF means zero power factor or Potier triangle method, and fourth is ASA method means American Standard Association method. पिछले वाले क्लास में हमने सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड और एम्पियर टर्न मेथड को समझा था. So in this lecture we will discuss about ZPF or Potier triangle method as well as the American Standard Association method, in short ASA method, and finally the references of this presentation. So in this lecture we cover ZPF method and ASA method. So let's start with topic voltage regulation. So voltage regulation is a no load voltage minus a full load voltage divided by full load voltage into 100%. This is the formula of voltage regulation जो कि हमने पिछले वाली क्लास में स्टडी किया था. नेक्स्ट टॉपिक्स जो हमने स्टडी किया था, methods to find the voltage regulations of the alternator. उसके बाद हमने देखा था सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड और EMF मेथड क्या होती है. नेक्स्ट हमने देखा था एम्पियर टर्न मेथड और MMF मेथड. So the today's topic is zero power factor or Potier triangle method to find out the voltage regulation of the alternator. This zero power factor ZPF method is used to determine the voltage regulation of synchronous generator or alternator. Synchronous generator को ही हम alternator बोलते हैं. This method is also called a Potier triangle method क्योंकि इसमें एक ट्राइंगल के थ्रू हम मेथड को सॉल्व करते हैं, ठीक है, जो कि पोटियर ने डेवलप की इस मेथड को. So this is called the Potier triangle method. In the operation of an alternator, the armature resistance drop I into Ra and the armature leakage reactance drop I into XL are actually EMF quantities, while the armature reaction is basically MMF quantity. In the synchronous impedance, all the quantities are treated as EMF quantities, as against this in MMF method all are treated as MMF quantity. तो हमने EMF मेथड जब देखा था जिसको हमने सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड बोला है, उसमें हमने सारी क्वांटिटी को EMF के फॉर्म में कंसीडर किया था, और इन केस ऑफ MMF मेथड all are treated as MMF quantities. Key point of this method is the ZPF method is based on the separation of armature leakage reactance and armature reaction effect. The armature leakage reactance XL is called Potier reactance in the method. Hence, ZPF method is also called Potier reactance method. To determine armature leakage reactance and the armature reaction MMF separately, two tests are performed on the alternator. The two tests are open circuit test and ZPF test.
तो अब हमें जो ये दो क्वांटिटी को सेपरेट निकालना है, पहला हमारा आर्मेचर लीकेज रिएक्टेंस और दूसरा आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट को हमें सेपरेट निकालना है। उसके लिए हमें दो टेस्ट परफॉर्म करने होते हैं, पहला ओपन सर्किट टेस्ट एंड सेकेंड इज जीरो पावर फैक्टर टेस्ट। So first one is open circuit test. The below is the block diagram to perform open circuit test on the alternator. ओपन सर्किट टेस्ट में हम क्या करते हैं, अल्टरनेटर में हमारे पास देयर इज टू वाइंडिंग, फर्स्ट वन इज कॉल्ड द आर्मेचर वाइंडिंग एंड सेकंड इज कॉल्ड द फील्ड वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग को हम डीसी सप्लाई से कनेक्ट करेंगे और आर्मेचर वाइंडिंग को हम ओपन सर्किट रख देंगे। सो दिस इज कॉल्ड द ओपन सर्किट टेस्ट ऑफ द अल्टरनेटर। ओपन सर्किट वोल्टेज को मेजरमेंट करने के लिए हम एक वोल्टमीटर को कनेक्ट कर देंगे आर्मेचर वाइंडिंग में। So we can measure the open circuit voltage in armature winding. Open circuit test is done step by step from the following points. Number 1, the switch S is opened. Number 2, the alternator is made to rotate using prime mover at synchronous speed and the same speed is maintained constant throughout the test. ओपन सर्किट टेस्ट जो हम करते हैं वो हम हमेशा रेटेड वोल्टेज पे करते हैं, और जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट होता है वो रेटेड करंट पे होता है, रेटेड वोल्टेज पे नहीं होता। शॉर्ट सर्किट टेस्ट में हम जो वोल्टेज है, रेटेड वोल्टेज, उसका 5 to 10% ही अप्लाई करते हैं, बट इन केस ऑफ ओपन सर्किट टेस्ट हम रेटेड वोल्टेज अप्लाई करते हैं। पॉइंट नंबर 3, the excitation value is changed using a potential divider from 0 up to rated value is a definite number of steps. The open circuit EMF is measured with the help of voltmeter. The readings are tabulated. Number 4, a graph of IF and VOC, that is field current and open circuit voltage per phase, is plotted to the same scale. This is called OCC or open circuit characteristics of the alternator. The next is test 2, zero power factor test. To conduct zero power factor test, the switch S is kept closed. Due to this, a purely inductive load gets connected to an alternator through an ammeter. A purely inductive load has a power factor of cos 90 degree, that is 0 lagging, as the test is called zero power factor test. The machine speed is maintained constant at its synchronous value. The load current delivered by an alternator to purely inductive load is maintained constant at its rated full load value by varying excitation and by adjusting variable inductance of the inductive load. Note that due to purely inductive load, an alternator will always operate at zero power factor lagging. चूंकि we can know that, हमें पता है कि जो इंडक्टिव लोड होता है उसमें हमारा जो है वो लैगिंग पावर फैक्टर हमें मिलता है, तो ये हमें बिल्कुल नोट रखना है, याद रखना है। So key point is that in this test there is no need to obtain a number of points to obtain the curve. Only 2 points are enough to construct a curve called zero power factor saturation curve. तो इसमें हमें डिफरेंट रीडिंग लेने की जरूरत नहीं होती है ZPF में, इसमें हमें केवल 2 पॉइंट ही काफी होते हैं जिसके थ्रू हम ZPF saturation curve जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। The below is the graph of terminal voltage against excitation when delivering full load zero power factor current. One point of this curve is zero terminal in short circuit condition and the field current required to deliver full load short circuit armature current. So this is the graph or full load zero power factor saturation curve. The second curve is called, so the first curve
जो हम बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे, डिफरेंट वोल्टेज की रीडिंग लेके डिफरेंट करंट की वैल्यू, डिफरेंट फील्ड करंट की वैल्यू पे हम डिफरेंट वोल्टेज प्लॉट करेंगे. सो वी गेट दी ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स, ये जो हमें मिलेगी. और ZPF कैरेक्टरिस्टिक्स हम बना लेंगे. 2 पॉइंट के थ्रू ही हम ZPF कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं. सो दिस इज कॉल्ड दी, एक्चुअली ZPF जो होती है वो ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स के पैरेलल हम ड्रॉ करते हैं. So while the other point, field current required to obtain a rated terminal voltage while delivering rated full load armature current. With the help of these 2 points, the zero power factor saturation curve can be obtained as. तो इसमें हम 2 पॉइंट निकालेंगे और इन्हीं 2 पॉइंट को हम मिला देंगे. So we get the zero power factor saturation curve. Number 1, plot open circuit. हम ये characteristics कैसे ड्रॉ करेंगे उसके लिए हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप. So plot open circuit characteristics on a graph paper as shown below figure. The number 2, plot the excitation corresponding to zero terminal voltage, that is short circuit full zero power factor armature current. This point is shown as A in the figure, which the x-axis. Another point is rated voltage while the alternator is delivering full current at zero power factor lagging. The point is P as shown in a figure. Number 3, draw the tangent to OCC through origin, which is the line OB as so dotted in the figure. This is called the air line or air gap line. Number 4, draw the horizontal line PQ parallel and equal to OA. Number 5, from the point Q, draw the line parallel to the air line which intersects OCC at a point R. Join RQ and join PR. The triangle PQR is is known as the Potier triangle. Number 6, from point R, drop a perpendicular on PQ to meet at point S. Number next, the zero power factor full load saturation curve is now we constructed by moving triangle PQR so that R remain always on OCC and line PQ always remain horizontal. The dotted triangle is shown in the above figure. It must be noted that the Potier triangle once obtained is constant for a given armature current and hence can be transferred as it is. Number next, through point A, draw a line parallel to PR meeting OCC at point B. From B, draw a perpendicular on OA to meet its at point C. The triangles OAB and PQR are similar triangles. Number 9, the perpendicular RS gives the voltage drop due to the armature leakage reactance IA into XL. यही ड्रॉप निकालने के लिए हमने वो ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट किया है और ड्रॉ किया है. ट्राइंगल के थ्रू एक्चुअली हमें आर्मेचर लीकेज रिएक्टेंस ड्रॉप को फाइंड आउट करना है. यही हमारा ZPF मेथड का एम है. और दूसरा आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट को हमें यूटिलाइज करना है. तो IA into XL ड्रॉप हमने निकाल लिया. Number next, length PS gives field current necessary to overcome the demagnetizing effect of armature reaction at full load. तो अब हमने आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट को भी, जो डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट है, उसको भी हमने ओवरकम कर दिया. Number next, the length SQ represent field current required to induce an EMF
for balancing leakage reactance drop RS. आपको जो भी पॉइंट देखना है, सबसे पहले आपको डायग्राम को कॉपी पे बना लेना है, डायग्राम को सामने रख के फिर इस पॉइंट को देखना है, तो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट समझ में आ जाएगा कि कैसे हम पोटियर ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट इजीली कर सकते हैं. These values can be obtained from any Potier triangle such as OAB, PQR and so on. So, armature leakage reactance can be obtained as length of RS is equal to length of BC is equal to IAPH full load into XLPH. What is the meaning of pH? pH is called the phase value. So, armature current का phase value full load पे जितना रहेगा into XL means leakage reactance की phase value कितनी रहेगी. इन दोनों के multiply से हम निकालेंगे length of BC जो कि equal है length of RS के. So, XLPH means phase value of leakage reactance is equal to length of RS or length of BC divided by IAPH full load. This is nothing but a Potier reactance. तो यही हमारा Potier reactance है जो कि हम ग्राफ से बहुत ही आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं. Next is use of Potier reactance to determine regulation of the alternator. अब हम Potier reactance से voltage regulation कैसे निकालेंगे वो हम देखते हैं. To determine regulation using Potier reactance, draw a phasor diagram using the following procedure. Number 1, draw the rated terminal voltage VPH. VPH is called the phase voltage as a reference phasor. Depending upon at which power factor cos phi the regulation is to be predicted. Draw the current phasor IPH lagging or leading VPH by the angle phi. Number 2, draw IPH into RAPH means I into RA draw है voltage drop to VPH which is in phase with IPH. जहां भी मैंने pH का यूज किया है वो सारे हमारी phase value हैं. While the voltage drop IPH into XLPH is to be drawn perpendicular to IPH into RAPH. Vectors but leading IPH into RAPH at the extremity of VPH. Point number 3. The RPH is to be measured separately by passing a DC current and measuring the voltage across armature winding, while XLPH is Potier reactance obtained by Potier method. The phasor sum of VPH rated IPH into RAPH and IPH into XLPH gives the EMF which is say E1 pH. So E1 pH is equal to VPH plus IPH into RAPH plus IPH into LPH. तो इससे हमने वोल्टेज निकाल लिया. वोल्टेज जो होगा वो हमारा कैसा होगा, वोल्टेज जो होगा उसमें जो हमारा मेन वोल्टेज है V प्लस उसमें हम लॉसेस को ऐड करेंगे. सो IA इंटू RA लॉसेस प्लस IA इंटू XL लॉसेस. तो pH जो लिया हुआ है वो सारी की सारी फेज वैल्यू ली है मैंने. So the next point is obtain the excitation corresponding to E1 pH from OCC which is drawn. Let this excitation be FF1. This is excitation required for inducing EMF which does not consider the effect of armature reaction. Point number 5.
The field current required to balance armature reaction can be obtained from Potier triangle method, which is say FAR. So FAR is equal to I PS is equal to IAC. डायग्राम में जो हमने PS वैल्यू बनाई है वो और AC जो वैल्यू हमने बनाई है वो इक्वल है. Point 6. The total excitation required in the vector sum of the FF1 and FAR. This can be obtained exactly similar to the procedure used in MMF method. Number 7. Draw vector FF1 to some scale leading E1 pH by 90 degree. Add FAR to FF1 by drawing vector FAR in phase position to IPH. The total excitation to be supplied by field given by FR. तो ये जो भी पॉइंट हमने देख रहे हैं, नेक्स्ट हम फेजर डायग्राम देख रहे हैं, उसी को हमने पॉइंट बाय पॉइंट जो है वो उसको एक्सप्लेन किया है. So the complete phasor diagram is shown in a figure. ये वो हमारा फेजर है जिसके अभी हमने ऊपर जो है पॉइंट जो है डिस्कस किए हैं कि इस फेजर डायग्राम को हमें कैसे ड्रॉ करना है. तो सबसे पहले रेफरेंस एक्सिस पे क्या ले लिया है हमने, इसको एक वोल्टेज को ले लिया है, दिस कॉल्ड द वोल्टेज. करंट हमने लैगिंग के लिए बना दिया है, तो फाई की वैल्यू जो है हमारी वो लैगिंग करंट की बनाई हुई है. फिर इस पे हमने लॉसेस को ड्रॉ किया है. पॉइंट बाय पॉइंट्स मैंने आपको बताया है कि फेजर डायग्राम को कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे. Once the total excitation is known, which is FR, so this is called the FR, called total excitation. This factor is called the FAR and this factor is called the FF1. So the corresponding induced EMF EPH can be obtained from open circuit characteristics. This EPH lags FR by 90 degree. The length CD drops due to the armature reaction. Drawing perpendicular from A and B on current phasor meeting at point G and H respectively. करंट पे क्या किया हमने, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है. ये करंट है, इस पे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है जो कि पॉइंट G और H को मीट कर रहा है. We get triangle OHC. So this is the triangle OOHC. At right angle triangle, hence E1 pH can be determined analytically also. Once EPH is known, the regulation of an alternator can be predicted as percentage of voltage regulation is equal to EPH minus of VPH divided by VPH into 100%. Or we can say that no load voltage minus full load voltage divided by full load voltage into 100. क्योंकि हम वोल्टेज रेगुलेशन को हमेशा परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं, इसलिए मल्टीप्लाई 100 से करेंगे. ZPF method takes into consideration the armature resistance and the leakage reactance voltage drops as EMF quantities and the effect of armature reaction as MMF quantity. तो हम बोल सकते हैं कि ZPF मेथड है वो कॉम्बिनेशन है EMF और MMF मेथड का, क्योंकि इसमें हम जो लीकेज रिएक्टेंस वोल्टेज ड्रॉप ले रहे हैं उसको EMF क्वांटिटी कंसीडर कर रहे हैं और जो आर्मेचर रिएक्शन क्वांटिटी हम ले रहे हैं वो MMF क्वांटिटी ले रहे हैं. This is the reality, hence results obtained by this method are never to the reality those obtained by synchronous impedance method and ampere turn method. The only drawback of the ZPF method is that
the separate curve for every load condition is necessary to plot if Potier triangles for various load condition are required. तो इसका एक ही ड्रॉबैक है कि अगर हमें डिफरेंट लोड पे निकालना अगर है हमें वोल्टेज रेगुलेशन, तो उसके लिए हमें डिफरेंट ZPF कैरेक्टरिस्टिक्स में पोटियर ट्रायंगल्स को ड्रॉ करना पड़ेगा. Next point is assumption made in the Potier triangle method. Some assumptions are made in the Potier method, which is listed below. Number 1. In the entire calculation procedure of Potier method, the armature resistance is neglected. But practically armature resistance is very small and hence this assumption does not cause significant error in the accuracy. Number 2. In Potier method, a zero power factor test is required to be done. But practically when inductors are used, a perfect zero power factor cannot be achieved. So the next point is, consider the graphical interpretation of Potier method shown in a below figure. This is the graphical interpretation of Potier triangle method. इसमें हम OCC ड्रॉ करेंगे और जीरो पावर फैक्टर कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करेंगे और एक ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करेंगे जिसको हम पोटियर ट्राइंगल बोलते हैं. इन दिस ग्राफ द डिस्टेंस RS, R dash S dash and BC are assumed equal. This represents the voltage drop across the leakage reactance, which is IAPH into IAPH जो full load है into XLPH. This indicates that the point P in the zero power factor method and point A in the short circuit test represent the same leakage reactance of the machine. But this is not true, as the excitation in the short circuit condition is OA, while that from the point P is OA as shown. Now the excitation OA dash is much higher than OC, and hence the point P corresponding to saturation condition represent large leakage flux, which is in this method assumed unchanged. Hence practically the leakage reactance corresponding to the saturation condition is higher than that assumed in this method. This introduced the error in the calculation. So this is all about the ZPF method. The next topic is ASA method, means American Standard Association method, to find out the voltage regulation of the alternator. So ASA or modified MMF method consider saturation effect for the calculation of voltage regulation. ASA method को हम modified MMF method भी बोलते हैं. We have seen that neither of two methods, MMF method and EMF method, is capable to giving the reliable value of the voltage regulation. The error in the result of these methods is mainly due to two reasons. Number 1, in these methods the magnetic circuit is assumed to be unsaturated. This assumption is unrealistic, as in practice. It is not possible to have completely unsaturated magnetic circuit. तो पहला तो हम मान के चलते हैं कि जो हमारा मैग्नेटिक सर्किट है वो अनसैचुरेटेड है, बट प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं होता. And second, in salient pole alternators, it is not correct to combine field ampere turns and armature ampere turns. This is because the field winding is always concentrated on the pole core while the armature winding is always distributed. तो salient pole generator में
क्या होता है, फील्ड एम्पियर टर्न और आर्मेचर एम्पियर टर्न को हम कंबाइन नहीं कर सकते। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि हमारी जो फील्ड वाइंडिंग होती है वो कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग होती है और जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है वो डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग होती है। सिमिलरली द फील्ड एंड आर्मेचर एमएमएफ एक्ट्स on magnetic circuit having different reluctance in case of salient pole machines. Hence the phasor combination of field and armature mmf is not fully justified. जो हमारे पास salient pole machine है तो उसमें एयर गैप जो है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है बिटवीन स्टेटर एंड रोटर, जिससे कि हमारा रिलक्टेंस जो है वो भी डिफरेंट होता है। रिलक्टेंस क्या होता है, व्हाट इज रिलक्टेंस? Reluctance is a property of magnetic circuit which oppose the flow of flux. इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो काम रेजिस्टेंस का होता है, मैग्नेटिक सर्किट में सेम वर्क रिलक्टेंस का होता है। और रिलक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ एयर गैप के। अगर एयर गैप ज्यादा होगा तो रिलक्टेंस ज्यादा होगा। In spite of these shortcomings, due to the simplicity of construction, the ASA modified form of MMF method is very commonly used for the calculation of voltage regulation. So this is the phasor diagram for ASA method. MMF method में भी हमने ये वाला phasor diagram देखा था. Consider the phasor diagram according to the MMF method as shown in figure 1. For cos phi lagging power factor load, the FR is resultant excitation of FO and FAR. तो FR जो है वो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है। ये जो FR है ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है, हमें कैसे मिलेगा, FO और FR के कॉम्बिनेशन से। So FO, what is FO? FO is excitation required to produce rated terminal voltage on open circuit, while is MMF required for balancing armature reaction effect. Thus OB is equal to FR is called resultant MMF. The angle between FAR and the perpendicular to FO is phi, where the cos phi is called the power factor of the load. But OB is equal to F. Resultant is based on the assumption of unsaturated magnetic circuit, which is not true in practice. Actually, MMF equal to BB dash is additional required to take into the account the effect of partially saturated magnetic field. Thus, the total excitation required is OB dash rather than OB. Let us see method of determining the additional excitation needed to take into the account effect of partially saturated magnetic circuit. Consider the no load saturation characteristics, that is open circuit characteristics and zero power factor characteristics. Draw the Potier triangle as discussed earlier and determine the leakage reactance XL for the alternator. The excitation necessary to balance armature reaction can also be obtained from the Potier triangle. The armature resistance is known. So E1pH is equal to VPH plus IPH into RAPH plus IPH into XLPH. तो जो पहला वाला है ये हमारा आर्मेचर ड्रॉप है और दूसरा वाला हमारा लीकेज रिएक्टेंस ड्रॉप है। Construct ASA diagram and draw phasor diagram related to the above equation. The ASA diagram has x-axis as field current and y-axis as the open circuit voltage. Draw OCC, open circuit characteristics, on the ASA diagram. Then, assuming x-axis as current phasor, and draw VPH at the angle phi above the horizontal. The VPH is the rated terminal voltage. Add IA into RA in phase with IA, that is horizontal,
and IA into XL perpendicular to the IA into RA to VPH. This gives the voltage even pH. Now, with O as a center and a radius even pH, draw an arc which will intersect y-axis at E1. From E1, draw horizontal line intersecting both air gap line and OCC. These points of intersection are, say, B, B dash. The distance between point B, B dash corresponding to the field current scale gives the additional excitation required to take into the account affect the partially saturation field. Adding this to FR, we get the total excitation as FR dash. From this FR dash, the open circuit voltage E1 pH can be determined from the open circuit characteristics using which the regulation can be determined. The ASA diagram is shown in figure 2. So this is the figure 2 or ASA diagram. The resultant obtained by ASA method are reliable for both salient as well as non-salient pole machine. तो ये वाली जो मेथड है ये दोनों के लिए रिलायबल रिजल्ट देती है, चाहे वो हमारा salient pole टाइप का मशीन हो और चाहे हमारा नॉन salient pole टाइप का मशीन हो. इसको हम मॉडिफाइड एमएमएफ मेथड भी बोलते हैं. So this is all about the ASA method to determine the voltage regulation of the alternator. Now the next topic is the references. So these are the references. And thank you for watching this video.